The district Tikamgarh is situated at Bundelkhand agro-climatic zone of Madhya Pradesh. The major 70% occupations of the population is depending on agriculture and animal husbandry. %70 farmers are marginal and small farmers category. %75 cultivated land are light and medium soil. The climate always variable and major crops are black gram, soybean, wheat, mustard and chickpea. Most of the domestic animals are cow, buffalo and goat. Biotic stress are on crops, diseases and insects, pests. NICRA, National Innovations on Climate Resilient Agriculture project, was launched in 2011-12, funded by ICAR and jointly in collaboration with NRM and Division of Agriculture Extension. The abiotic factors are drought, erratic rainfall, early withdrawal monsoon, late monsoon, dry spell, cold, fog, frost, hailstorm, heavy rain, winter rain. Average annual rainfall is 1000 millimeters. Defunct old water bodies, harvesting structure, stop dam, canal and well, where rejuvenation, construction and repairing with convergence of district elite departments. The availability of water increased the cropping intensity up to 195%. Extra availability of irrigation water resulted to diversification in the drought period, ensured the life-saving irrigation during early withdrawal monsoon and dry spell conditions. Deep summer plowing facilitated to increase the soil water holding capacity by 26.1%, infiltration rate by 71.8%, and best utilization of water increases by 34.2%. NICRA project was implemented in Kanti village. After 10 years of project implementation, the farmers' income has doubled
and their livelihood change as comparison to 2011 to 12. Biogas plant about 165 number in running condition. Biostress resistant black gram varieties resulted early maturing about 10 days, reduction in MYMV 88%, yield saving 6 to 7 quintal per hectare, money saving rupees 21,000 per hectare. Low water requirement crop mustard variety resulted suitable during low rainfall year and for light and medium soil of the district. Money saving rupees 21,000 per hectare, yield saving 5.5 quintal per hectare. सोयाबीन GS 5560 बोया है, BBF पद्धति से बोया है। उत्पादन में जो है हाथ के छिटकी बारी से कम निकलत है, वही में ज़्यादा निकल जाता है, करीब कम से कम 2-3 क्विंटल का अंतर तो है। Preventive vaccination in livestock resulted reduction in animal diseases by 80%, milk yield increased by 32%, reduction in mortality in calves by 7%, money saving by 40%. मुर्रा पड़ा नस्ल सुधार का ये क्रम में दिया गया है। उससे आसपास के जो क्षेत्र के जानवर हैं, गाँव के हैं, अन्य गाँव के हैं, तो उनसे नस्ल सुधार अच्छी हो रही है, दूना दूध उत्पादन हो रहा है।
बीज तो ढेर गुना है ना जी। तो विज्ञान का यही जो विज्ञान का कमाल है। गैस संयंत्र से निकलने वाली सैलरी का उपयोग जैविक खाद के रूप में खेती में डालकर अपनी फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहे हैं। Natural resource management, most of the interventions has been taken by the KVK or the deep summer ploughing, biogas plant as use of renewable energy, and BBF and ridge furrow sowing. Crop production module, we have tested the resilient variety in soybean, black gram, chickpea, mustard and wheat. In livestock production and management, we have tested the new breed in goat and buffalo. In goat as a Jamnapari and in buffalo as a Murrah. So after 10 years of the interventions, farmers' income has doubled and their living standard has to also be improved. इस काटी गांव में आके सब किसान से मुलाकात हो गया और मेरा बहुत एक बात अच्छा लगा है के जो दिया विज्ञान से किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो गया। जोनल मॉनिटरिंग कमेटी है जो क्रीडा हैदराबाद के नेतृत्व में निकरा परियोजना के अंतर्गत इन सारे जो क्रियाकलाप हैं, कार्यविधि हैं और किसानों के हित कर जो जलवायु सहनशील कृषि की जो क्रियाकलाप हैं उसको देखने के लिए उसको मूल्यांकन करना। इस गांव में आके सारे किसान से मिल के और इनसे चर्चा करके और इनका कार्यकलाप देखने के बाद मेरे को ये विश्वास हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री का जो किसान के आय के दोगुना करने का जो सपना है उसको साकार करने में कृषि विज्ञान केंद्र का जो सहयोग है उसके साथ मिलके ये हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ना केवल फसल और इन्होंने हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो बागवानी का है उसका भी कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक सामूहिक खेती का जो रूपरेखा यहाँ धीरे धीरे उभर रहा है उससे धीरे धीरे हमारा गांव का समृद्ध करने का जो योजना है वो समृद्ध हो पाएगा। As effect of global warming change the cropping system environment which challenge the human population for feed in coming century. The resilient technologies are being important for agriculture from come over the climatic combats. Nikra project experience of 10 years in Nikra villages of Tikamgarh MP which changed the farmers' crop production, LPM and livelihood security for sustainability. The increased in mechanization in village, adoption of new crop and new breed are being seen. We thankful to the ICAR, NRM and Extension Division, CRIDA, Atari Zone 9, JNKVB and KVK Tikamgarh for their efforts to success of the project.